So hello guys, welcome back to the channel, and in today's video we'll be learning about two scaling techniques जो बहुत important है whenever you are working with some linear models like linear regression and logistic regression or some neural networks which we will be studying in our future videos. So without wasting more time, let's get started. So our main focus is to understand both of these scaling techniques and how to implement them. So let's see why scaling is important and क्यों हमें परफॉर्म करना चाहिए स्केलिंग whenever we are dealing with some linear regression model. So scaling is an essential pre-processing step in machine learning that helps models perform better by bringing numerical features to a standard range. So basically whenever we are dealing with any machine learning problem, तो जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग स्केल्स में हो. फॉर एग्जांपल किसी का एज, सो एज कैन रेंज बिटवीन 1 to 60, 70, 100 एनीथिंग. बट सेम डेटा में अगर कोई अलग फीचर है, लेट्स से सैलरी, देन सैलरी कैन बी रेंजिंग टू एनी वैल्यू. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्केल्स ये दोनों कॉलम्स के बीच में. सो टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टू अ सेम स्केल वी यूज़ स्केलिंग, बिकॉज ऑफ विच हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड there is no biasness towards a particular feature just because उसके values बहुत ज़्यादा high range में हैं. So there are mainly two common scaling techniques that are used. First is standard scaler, जिसे हम लोग Z-score normalization भी कहते हैं. Second is the MinMaxScaler, which is also known as normalization. So many machine learning algorithms like linear regression, KNN, SVM or neural networks perform better when features are on a similar scale. सो बेसिकली जैसे ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स है, यहाँ पर स्केलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो विदाउट स्केलिंग फीचर्स विथ लार्ज वैल्यूज़ में डोमिनेट द मॉडल लीडिंग टू पुअर प्रिडिक्शंस. सो अगर हम स्केल नहीं करेंगे किसी वैल्यूज़ को, तो जिस फीचर में वैल्यूज़ बहुत हाई स्केल पे हैं और बहुत ही हाई रेंज में हैं, दे वुड डोमिनेट अदर फीचर्स so that other features might get neglected. So let's see an example. So let's say we have a feature 1 which is salary, which is ranging from rupees 20,000 to let's say 1 lakh, और हमारा second feature है age, that is ranging from 18 to 60. So since salary has much larger value than age, it can disproportionately influence the model. हमारा मॉडल बायस हो जाएगा टुवर्ड्स सैलरी बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड एज माइट गेट निगलेक्टेड. सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी यूज स्केलिंग एंड ब्रिंग बोथ ऑफ दिस फीचर्स टू अ सेम स्केल. तो लेट्स कवर बोथ ऑफ दिस स्केलिंग टेक्निक्स वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड स्केलर. सो स्टैंडर्ड स्केलर विच इज़ ऑल्सो नोन एज Z-score normalization transforms the data so that it has a mean of 0 and a standard deviation of 1. So whenever we apply standard scaler, तो ये क्या कर देगा, ये हमारे पूरे वैल्यूज़ में जो उसका मीन होगा उसका मीन 0 कर देगा एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू नो मच अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आई हैव अ वीडियो इन माई स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है अबाउट बोथ ऑफ दीज टर्म्स. सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो वंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, so that it will be much easier for you to understand how standard scaler works. So as we have many scaling techniques, so when to use standard scaler? So there are a few points that indicates when do we need to use standard scaler. Number one is when data follows a normal distribution. So if you know about normal distribution, so we get a bell-like curve, तो जिसका majority of the values are in the center and जिसका मीन एंड मीडियन इज़ द सेम. सो whenever you have this kind of distribution in your feature column, तो आप उसके ऊपर standard scaler अप्लाई कर सकते हो. Second, when features have different scales but contains outliers. So this is one of the important point why we should use standard scalars, because जब आपके फीचर में बहुत सारे outliers हैं तो ये उन outliers को भी अच्छे से हैंडल कर पाएगा. Third, suitable for algorithms that assume normality, for example logistic regression, linear regression, neural networks, etc.
Now let's learn about MinMaxScaler. So MinMaxScaler जिसे हम normalization भी कहते हैं, it transforms our features to a fixed range of values, usually 0 to 1. आप इसको -1 to 1 के रेंज में भी रख सकते हो. So this is the formula. बहुत easy सा formula है. So हम क्या करते हैं, x जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, we subtract it with x का मिनिमम वैल्यू and then divided by x का maximum value minus x का minimum value. So you can pause the video for a second and just have a look and try to understand this formula. ये बहुत easy सा formula है, although हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है because we have certain libraries which do the scaling for us. So as we have seen StandardScaler, so in similar way we can implement MinMaxScaler as well. So let's see when to use normalization or MinMaxScaler. So slight opposite to when we use StandardScaler, हम MinMaxScaler तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो फीचर है दैट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मे बी वो स्क्यूड हो सकता है. व्हाट इट डज इज़ बेसिकली ये जो आपका जो भी वैल्यूज़ का रेंज है वो आप 0 to 1 या -1 to 1 के रेंज में ला सकते हो, सो दैट जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी 0 and the maximum value will be 1, or in case of -1 to 1 the minimum value would be -1 and the maximum value would be 1. तो ये बहुत यूज़फुल है when we are working with CNNs या any computer vision project like जब हम images के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर we have pixels and pixels के जो colors है they range from a value between 0 to 255. So at that time, to bring it to a scale of 0 to 1, we use normalization very much. So these are few points which we need to check before applying MinMaxScaler. So let's take an example. We are on Kaggle. So Kaggle पे I have found this data set, heart attack prediction, and we'll use this. So when you don't want to download the data and use it on Colab, आप directly Kaggle भी use कर सकते हो. Just click on this code here, then scroll down and create a notebook पे जब आप click करोगे तो एक notebook open हो जाएगा and you can experiment with this particular data set there. So as you can see automatically इसने basic libraries import कर लिया जैसे NumPy, Pandas, and all you have to do is run this cell so that the things will set up. and यहाँ पर you can see कि आपका जो data set है it is present here. So it will take a while if you are running this notebook for the first time. So basically जब ये cell run हो जाएगा you will have this path to read that CSV using pandas. So what we will do, we'll write df is equal to pd dot read CSV और हम ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. So copy paste and next line में if I write df dot head and run it, so you'll be able to see कि ये डेटा सेट हमने लोड कर दिया है जिसमें there is a label column heart attack where it predicts 0 or 1, so it's a classification problem. and बहुत सारे features हैं हमारे पास. so in all there are 28 columns. so as you can see यहाँ पर काफ़ी columns ऐसे हैं जिनका range is different from other columns. for example ये blood pressure जो है that is in range of I guess 1 to 100 and cholesterol level है that is about 200. So similarly यहाँ पर we also have this age column. So we will try to bring all these features to a same scale. So what we will do is I will show this. So what we will do is we will fetch only numeric data types for now because categorical columns को कैसे handle करना वो अभी तक हमने सीखा नहीं है. So to fetch only numerical columns all you have to write is df dot select d types
एंड यहाँ पर आपको लिखना है इंक्लूड, एक पैरामीटर है, इंक्लूड में आप स्ट्रिंग में पास करोगे नंबर. सो व्हेन यू डू दिस एंड रन इट, तो आपके पास एक ऐसा डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर आपके ओरिजिनल डेटा सेट में से सिर्फ जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं या जिनका डेटा टाइप इंट या फ्लोट और एनी अदर न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, वही आपको यहाँ पर दिखेंगे. ओके, सो लेट्स सेव इट इनटू अ न्यू df. राइट numdf एंड रन इट. तो ये सेव हो जाएगा numdf में. Now we will perform standard scalar on it. So let's first import that. So I will write import. So I will write from sklearn dot preprocessing import standard scalar. Okay, so as you can see, standard scalar import हो चुका है. So we'll create an object for the standard scalar named sc is equal to standard scalar and we will run it. So sc नेम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है. So जब आप sc डॉट करोगे एंड इफ़ यू प्रेस टैब, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे. सो वी आर कंसर्न विद ओनली टू मेन फंक्शंस, वन इज फिट एंड अनदर इज ट्रांसफॉर्म. सो बिफोर फिटिंग दिस हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल df है वी विल डिवाइड इट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट. सो यहाँ पर आई विल ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split. So why is it important to split the data set into train and test? Because standard scalar में जैसे I told you we have two functions which we require, one is fit and another is transform. तो fit क्या करेगा, it will learn from the data set and it will define कि क्या values होने चाहिए for that particular feature, and then we will apply the same using transform on our test data set. So we will write xtrain comma xtest comma ytrain comma ytest is equal to train test split, और इसमें पास कर देंगे हम हमारा numdf कॉमा एंड हम टेस्ट साइज देंगे 20%. So I will write 0.2 and we'll run it. Okay, so actually we have to divide the data into label and input feature, जो हमने किया नहीं. So sorry for that. So we will do this. हम x and y में से split कर देंगे. So x would be numdf dot drop column is equal to heart attack, because heart attack is the name of the label column, and x is equal to 1. Similarly y would be हमारा df का heart attack. Okay. It will be columns. Okay, so if we check x dot head, so x is nothing but all the input features. यहाँ पर आपका हार्ट अटैक वाला कॉलम नहीं है, विच वॉज अवर लेबल फीचर एंड जो हमने y में स्टोर किया है. सो इफ आई शो यू y, तो y में यू हैव ऑल द लेबल्स and the name of the column is heart attack. Okay, so अब हम वापस आएंगे इस कोड में and we will pass x, y and then run it. तो अभी हमारे पास xtrain and xtest, ytrain and ytest आ चुका है. So what we will do is, हमने जो स्केलर ऑब्जेक्ट बनाया है sc,
we will first use it to learn it from our data. तो learn करने के लिए हम लोग extend pass करेंगे उसमें. So we will let sc.fit and we will pass xstring. So when I run it, you can see ये fit हो चुका है. Okay. And now if I write sc.transform xtest and run it, so you can see इसने सारे values को transform कर दिया है. Okay. Here one row represents one row of your data frame. So हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे xtest स्केल्ड में. बट माइंड यू, हमने अभी तक सिर्फ टेस्ट डेटा को स्केल किया है, ट्रेन डेटा को स्केल नहीं किया, विच इज़ बिकॉज हमने सिर्फ मॉडल को ट्रेन कराया है यूजिंग फिट एंड उससे हमने ट्रांसफॉर्म नहीं करा है हमारे एक्स ट्रेन वाले डेटा पे. सो टू डू दिस व्हाट वी कैन यूज इज, फिट के साथ, फिट एंड ट्रांसफॉर्म के साथ एक और थर्ड मेथड होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो हम यूजुअली ट्रेनिंग डेटा पर अप्लाई करते हैं. सो वी डू sc.fit transform fit underscore transform and will pass xstring. So इसको जैसे मैं रन करूँगा, you can see हमारा ट्रेनिंग डेटा भी स्केल हो चुका है. and then we can save it in xstring scale. So this is how you perform or implement standard scaler. And in similar way हम min-max scaler भी अप्लाई कर सकते हैं. So now let's apply min-max scaling. So min-max scaling हम सेम हमारे x train and x test वाले डेटा पर परफॉर्म करेंगे. So this is our x train and to perform min-max scaling we will import from sklearn dot preprocessing import, we will write min-max-scaler. So min-max-scaler import हो चुका है. We will create an object mms is equal to min-max-scaler. So if you refer to its documentation, we can see कि इसके अंदर और क्या क्या parameters that we can use. For example, एक range का parameter होता है where you can set the range whether आपको 0 to 1 में चाहिए या -1 to 1 में चाहिए. So let's check the documentation. So we'll write min-max-scaler Scikit-Learn. So we have this parameter feature range जिसमें आप बता सकते हो minimum value and maximum value. So we'll use this. So we'll write feature range is equal to, it should be in a tuple, so minimum should be 1 and minimum should be 0 and maximum should be 1. And now if we run it, so our object is ready. Now we will fit and transform it on our xtrain wala data set. So I will write mms dot fit transform xtrain and run it. तो आप देखोगे सारे वैल्यूज़ जो है वो 1 से 0 के रेंज में है. ओके, सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर टेस्ट सेट एंड इफ आई चेंज द रेंज फ्रॉम, लेट्स से मुझे -1 से 1 के रेंज में चाहिए एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड नाउ इफ आई ट्रांसफॉर्म इट अगेन, तो आप देख सकते हो कि all the values are in the range of -1 to +1. So this is how you can implement standard scaler and normal scaler. So now that we have understood what is a standard scaler and min-max scaler and we have also understood how to implement them, तो एक क्विक कंक्लूजन या एक क्विक रिकैप हम देख लेते हैं between the key differences of both of the scaling techniques. So as you can see,
there's a table on the screen. तो यहाँ पर whenever we use standard scalar तो हमारा mean जो है that will be 0 and standard deviation will be 1, and whenever we are using a min max scalar or normalization then हमारा जो data है इसका range हो जाएगा from 0 to 1 or any other custom range that you want to pick. So second point is handling outliers. So यहाँ पर standard scalar will be better at handling outliers than min max scalar because min max scalar is sensitive. As you know ये maximum value को कंसीडर करता है. सो इफ़ यू हैव एनी आउटलायर जो बाकी पॉइंट से काफ़ी हाई है देन इट माइट गेट अफेक्टेड. थर्ड थिंग इज़ when to use. So standard scalar can be used when your data is normally distributed, or min-max scalar can be used otherwise. So for which algorithms standard scalar is best used for? So you can use for SVMs, you can use for PCA linear models. min-max scalars on the other hand usually आप यूज़ करते हो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, CNNs के लिए, KNN के लिए. So I hope I tried to explain you the scaling techniques in an easy way. In following videos we will be covering encoding techniques as well. This way we will try to deal with categorical variables and how to encode them. So if you like the video, please share and subscribe the channel if you are new. Thanks for watching.